quantitative revolution. Now my voice is clear to all. Thank you. Done. So let's quantitative revolution in geography or the QR phase. जहाँ को हम कहते हैं QR phase in geography. Quantitative revolution. Now this is याको जानिबा बहुत ही जरूरी geographical thoughts right, because this one will suddenly increase the mark and you can use in everywhere. Quantitative revolution. So quantitative revolution ଯଦି ଦେଖିବା geography more than 200 years. अच्छा ମୁଁ ଟିକେ ଏକ overline କରିଦିଏ कि quantitative revolution कौन. Quantitative revolution, it was a phase in geography. Simple I will say phase in geography. ना देखो सब subject किसी ना किसी phases देखी, जेମିତି human lives also passes through the phases. We also human being passes through the different phases. Like each of the discipline, I would say geography or being geography as a subject or discipline हम कहबा as a subject or discipline also passes or has passed through the different stages and the phases as well. तो एमती गोटे फेज आसीथिला जियोग्राफी रे जेतेबेले जियोग्राफी आमे कहबा गोटे इट वाज लाइक जियोग्राफी को रिवाइव करबा बहुत जरूरी थिला. गोटे डार्क फेज चलथिला जियोग्राफी रे. जियोग्राफी को कहीं पसंद करू नथिले एंड याकू सुनिबा बहुत जरूरी रादर देन के रट्टा मारिबा, कना सुनिले ही अधिक लिखि परिबो परे तमे जे मु कोन वर्ड यूज करूची. किंतु मु कहल जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन ऑफ द सब्जेक्ट लेट्स से इवॉल्व हेची, मतलब ये सब्जेक्ट आजिर सब्जेक्ट नो या हंड्रेड्स ऑफ ईयर सब्जेक्ट है ना. आम के पास जो ग्रीक टाइम भी सब्जेक्ट अच्छी एंशिएंट ग्रीक टाइम रो जियोग्राफी आम के पास जो सब्जेक्ट हिस्ट्री एज सब्जेक्ट है ना, ये सब सेवेठू अच्छी एंशिएंट टाइम रो पॉलिटी. बट कोठी ना कोठी जदी देखिबा गोटे डार्क फेज चलथिला जियोग्राफी रे, या हम कहबा डार्क फेज. ना डार्क फेज कोले जियोग्राफी रे हम देखिबा जस्ट बिफोर जो तुमरो अर्ली 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, सॉरी आई वुड से अर्ली 20th सेंचुरी है ना, और 1900 1 2 3 20 10 15 जहाँ बाबत हुआ. तो 20th सेंचुरी कौन है, अर्ली 20th सेंचुरी एंड आई वुड से जस्ट बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वार 2 पूर्व जियोग्राफी माके कहीं कौन से भी लोग जियोग्राफी को पसंद कले नहीं. मतलब जियोग्राफी वाज गोइंग थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम इन वर्ल्ड. Every university there was a debate whether should we teach geography to the peoples or not. So geography ro into a dark phase but critical phase कहबिनी dark phase it was going on. बाकी subject गुड़ा में देखिए they were running, they were smoothly going through and they were selling through the time, they are moving across, they were getting support from the society है ना. Let's say sociology, polity, history है ना, ये सब चलता. तो स्पेशली जमती जियोग्राफर माने देखिले कि जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन जदि लोक माने पसंद करू नाहंती, और the geography as a discipline, if that is not getting that much of, I would say, backing from the geographer itself and the other scholars, so we need to revive the geography. We need to revive the geography and geography को हमें बाकी सब्जेक्ट जमती लेट्स से के बाद सोशियोलॉजी में कहबी, लेट्स से सोशियोलॉजी कथा नहीं जाओ, पॉलिटी कथा नहीं जाओ, एमाने जमती डायनामिक ना, डायनामिक एंड आम कहबा कि सोसाइटी रो जो जिंस सोसाइटी दरकार ता ऊपर से माने दे टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स, दैट मींस द थिंग्स व्हिच इज रिलेवेंट टू द सोसाइटी. हेंस ज्योग्राफी भी सेमिति जो स्कॉलर्स माने ज्योग्राफी रे थिले से माने भी चाहिले कि आमे ज्योग्राफी को एमती गोटे डिसिप्लिन बनेबू बा ज्योग्राफी रे एमती किछि आमे स्टफ को ऐड करिबू which will attract the other people and the scholars and which will have, I'll say, use for the society. Society रो यूज पाई थी बसे सब्जेक्ट है ना. होप के मतलब अधिक अटेंशन देखि सुनिया पड़िबो के माने यार कोन होउची. तेणु करके हमें देखिबा कि जियोग्राफी को अटेंशन आनियार थिला है ना, कि हमको जियोग्राफी को अधिक अटेंशन दबार थिला, पॉपुलर करिवार थिला जियोग्राफी को है ना. इवन एमिटी टाइम आसला जियोग्राफी रे कि ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए रो जो यूनिवर्सिटीज अच्छी से माने जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन को ड्रॉप भी कर देले. कैन यू इमेजिन दिस. इवन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया रो यूनिवर्सिटीज दे ड्रॉप जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन.
कहले जियोग्राफी पढ़ाबो नहीं आम यूनिवर्सिटीज रे कोन पे बिकॉज जियोग्राफी डज नॉट हैव सोशल रिलेवेंस नहीं सोशियोलॉजी इज हैविंग सोशल रिलेवेंस पॉलिटी इज हैविंग इकोनॉमिक्स इज हैविंग so likewise this subject does not have okay so that means जो geographer माने थे they were shocked to report this kind of incident तो से माने चाहिए कि जियोग्राफी को ताले हमको रिवाइव करियर अछि जियोग्राफी ऊपर डिबेट हो जियोग्राफी को रिवाइव करा जो केमिति रिवाइव करबा ताले जियोग्राफी को नुआ स्टाइल्स हम जियोग्राफी को आनिबा नुआ किछि थीम जियोग्राफी रे नुआ ऐड करबा but geography as a discipline को हमें एमिति इवॉल्व करा जाऊ so that everybody will start to like and it will have the social importance as well. So more than 200 years हम देखो was confrontation of the problem of generalization and the theories building थिला. तो geography रे जदि मु देखबी before the 20th century जदि तम माने भी देखिबो चाहे से अल्फ्रेड वेगनर रो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 हे जो किबा जेके जिफ लेट्स से मु 1912 अल्फ्रेड वेगनर कथा नहीं जो कि जेके जिफ कथा नहीं जो देन और तुमर रैंक साइज रूल कथा नहीं जो कि प्राइमेट सिटी कथा नहीं जो all these हमें कहबा जो theories सब आसीची ना these theories are traditionally developed हमें कहबा in 20th century रे तो ई जेते theories तो maximum theory geography रे चाहे से heartland theory ही जो dreamland theory ही जो तो now हमें देखबा 20th century geography रो अधिक theories आसीला models आसीला so that means हम कहबा generally geography रे सब models and theories नथिला तेणु करके जियोग्राफर्स माने ध्यान देले कि हमको जियोग्राफी रे अधिक थियोरीज एंड मॉडल्स बनेबार अछि जोथि को नहीं कि जो मॉडल्स एंड थियोरीज विल हैव सोशल रिलेवेंस दिस इज वेरी इंपोर्टेंट जो मॉडल्स बना जिवो एंड थियोरीज रहबो विल हैव एप्लीकेशन जेंति कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी स्टिल हैविंग एप्लीकेशन जेंति कि रैंक साइज रूल स्टिल हैविंग एप्लीकेशन like I will say the primate city still having application. So these are the cities sorry these are the models and theories हमको एमिति किछि models and theories evolve करियर छि which will have the social significance about the society daily life रे यूज होई परथबो तेनु करके जो प्रॉब्लम फेस करूथला ज्योग्राफी आज 200 वर्ष हैला कोन ना तांकर थ्योरी बिल्डिंग करिबा जनरलाइज करिबा टॉपिक को ये प्रॉब्लम थिला whereas other subject like sociology public administration they were building so many theories है ना तांकर long tradition थिला theories in sociology theories in public administration is a long हम कहबा tradition किंतु ज्योग्राफी रे theories model कि हमें देखो जो कोपेन क्लासिफिकेशन ये वगैरह एते ये आगरो नथिला कारण हमें कहबा ज्योग्राफी रे एटा कुटी नथिला ज्योग्राफर माने केवल स्टडी करथिले बट थियोरीज वगैरह किछि बनाउ नथिले तेणु करिकी नुआ नुआ मॉडल आसी पार नथला थियोरीज आसु नथला जोटा कि सोसाइटी रे एप्लीकेबल हे परिबो बट सडनली हम देखिबा सेकंड वर्ल्ड वॉर पर कोन हैला कि ज्योग्राफी को जेतो गोटे डार्क फेज चले ज्योग्राफी रे चलिबो जोटा मु तुमके एबे देखिबी कि हियर इज द डार्क फेज ऑफ ज्योग्राफी ना आफ्टर सेकंड वर्ल्ड एटी लिखाई छी देखो काहे कि हम देखिबा कि व्हाई क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है ना क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कोन पई क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एथि पई कि जियोग्राफर्स मानन को हमें देखा रियलाइज कले एक मिनट हियर यू कैन सी सेकंड वर्ल्ड वॉर पर कहीं कि क्वांटिटेटिव फेज आसला कारण वर्ल्ड रो सोशल कांग्रेस हेल्ड इन 1949 अच्छा किसी बुझा पड़ुची तुम मन को ना आउ किसी सिंपलीफाइड करि परिबी मु कौन कहूँ को सो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन म्यूट तो है नहीं आवाज तो आसे ना समस्त को तेणु करके जियोग्राफर जदि हमें देखा जियोग्राफी पई गोटे डार्क टाइम थिला जो थरे मॉडल्स नथला थियोरीज नथला बाकी सब्जेक्ट मन को थिला मन को ट्रेडिशनल थिला दे वर मेकिंग व्हाट थियोरीज एंड मॉडल्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स सो जियोग्राफर्स माने हमके सब्जेक्ट्स वर हमें इन्वॉल्व थिला डिबेट एंड डिस्कशन फॉलोड ऑन द subjective approach थिला geography रे or an objective approach in geography making geography objective required laws of physics models हमको दरकार तो geography को मोर objective बनेबार
टार्गेट थिला कि ज्योग्राफी शुड बी मोर ऑब्जेक्टिव तेणु करी जेमति कि कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ये गोटे ऑब्जेक्टिव जब भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड पर हम देखा सब्जेक्ट्स वाज रिवाइव्ड तो जहाँ भी हो कि जस्ट इन द अर्ली टाइम ऑफ द सेकेंड दैट इज व्हाट 20th century द अर्ली टाइम ऑफ 20th century में देखिबा कि ज्योग्राफी इट वाज कोठी ना कोठी प्रॉब्लम फेस करथला बहुत प्रॉब्लम फेस करथला ज्योग्राफी ना प्रॉब्लम फेस होतला सेथमे ताको रिवाइव करबा बहुत जरूरी थिला ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन को रिवाइव करबा केमती रिवाइव करबा एंड व्हाई रिवाइव करबा ना रिवाइव करिया पे हेले कोन करिया पड़ियो हमको ज्योग्राफी को प्रैक्टिकल करिया पड़ियो ज्योग्राफी को मोर रियलिस्टिक करिया पड़ियो ज्योग्राफी को मोर आई वुड से रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ यूज डेली यूज होई परथो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन सो दैट लोक माने ज्योग्राफी अधिक people or there will be more people to be attracted towards the geography so तेणु geography रे मॉडल्स हमको बनेगर अछि थ्योरीज बनेगर अछि जो सब थ्योरीज हम एबे पढुछे चाहे से बॉन्थनियन थ्योरी हो चाहे से सेंट्रल प्लेस थ्योरी हो चाहे से हमें वेबर हो कि हमें क्रिस्टलर कथा नहीं जाओ स्मिथ कथा नहीं जाओ नंबर ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल्स वी आर गोइंग थ्रू let's say हमें even urban settlement जेतरे पढुचे सेतरे भी हमें theories पढुचे migration रे theories पढुचे number of theories now evolved in geography but these theories evolved suddenly in the 20th century now why because 20th century रे geography को गोटे नुआ मोड दबार थिला geography को precise करे थिला geography को objective करिवार थिला सेतबे हमें objective करिवा को हेले geography रे किछि principles किछि नुआ tools use करिया पड़ो and that tools comes from the physics that comes from the mathematics that comes from the statistics okay these tools बा हमें कहबा जो tools अछि तमरो geography रू बा geography को जदि हमें गोटे नुआ डायरेक्शन दबा ना तापे हमको नुआ टूल यूज करिया पड़ो like as I said statistics physics let's say mathematics then geometry as well है these things required करथला ज्योग्राफी रे हमें मैथ यूज करबा साइंस यूज करबा सो दैट यूज करके ज्योग्राफी को गोटे साइंटिफिक अप्रोच दबा ज्योग्राफी को गोटे हम कोन करे साइंटिफिक अप्रोच दबा जो descriptive थिला ज्योग्राफी and that would be more precise and it will have a scientific orientation that will be used for the society as a whole or it would be more or less relevant in the society society कौन हो परिबो relevance हे परिबो तेणु करके after the second world war geographers especially developed countries realized the significance of using the mathematical language rather than the literature in geography okay mathematical language use karibo and when I say mathematical language means like the math like reasoning you will use like data है ना ये सब यूज करा जिवो तेणु geography as a subject matter हमें कइबा become prominent हमें जदि देखो geography रे जोटा मु कहथि even the Princeton देखो एटी कोन हैला किछि सोशल कांग्रेस हैला कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार परे काहे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आसिला कारण जो सेकंड आमे कहबा जो सोशल कांग्रेस हेल्ड इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए बहुत फेमस यूनिवर्सिटी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एथरे कंक्लूजन कोन आसिला देखो कि जोटा कि हमें कहबा सब्जेक्ट मैटर्स बी रिलेवेंट फॉर द सोसाइटी जो सोशल कांग्रेस हैला कि एई सोई भले सब्जेक्ट हमें सोसाइटी रे बा पढेबा दरकार स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी रे those subject is having relevance to the society practically applicable to the society the approach become absolute in a changed socio-economic situation तेणु करके हमें कहबा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आसीबार कजेस कोन कजेस होची वर्ल्ड साइंस कांग्रेस हेल्ड इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो थरे से माने कहले जो सही भले सब्जेक्ट हम यूनिवर्सिटी रे पढाइबू जोटा सोशल रिलेवेंस होची एंड ज्योग्राफी नथिला सेते बेले से माने they advocated that like American and Canadian university they dropped the geography even Australia be universities they also certain university they also dropped चले geography को हम यूनिवर्सिटी रे पढाबो नहीं ना कोन पई because geography does not have social relevance तेणु करके geographer मानको गोटे हमें कहबा गोटे that was a strong slap on the face of the geographer कि geography is though it's a
very long disciplines or having historical rich discipline as well. But despite the fact the peoples are not ready to adopt the subject in the universities, that means we were lacking somewhere and we need to improve that area, or if we are facing some sort of lacunas in this particular subject, we will improve that subject and the subject will have a different mode and the different orientation. And I would say the orientation of the subject and the mode of the subject will be changed, and also the objective as well. Also the objective of geography will be changed, so that people will again started to love the subject and the subject will what get its relevance again है ना relevance को back करी परिबो. Then safer कथा हम देखिबा safer argument कले supporting the that is what nomothetic approach जहाँ हम nomothetic approach कहूचे. So nomothetic approach अर्थ that is the what general approach, that is हम कथा को general approach to study the geography. When I say nomothetic approach, that is the general approach in geography. Geography is having two approach. One would be particular approach and one would be general approach to study the geography. There is two approach. One is the general approach to study the geography and one is the particular approach to study the geography. So when we talk about the that is the key why quantitative revolution of the QR phase after the Second World War, because like scholars like Sefer who were argumenting in support of the nomothetic approach, that is the general geography. And when you are supporting the general geography, the geography as a whole, that means you are against the regional geography or against the physical geography to against the particular geography. So in that case what will happens na say case re geography रा कोटी कोटी जो relevance हमें कोचे ना particular geography पर कोटी ना कोटी doubt आसीबो geographers ऊपर बा questions आसीबो. So geographer themselves wanted geography to be par with physical science. सेथि ପାଇଁ भी मैंने models and theories दरकार थला. Models and theories and यहाँ geography so that geography would be par with the other social sciences like the sociology, polity, economics है ना ये सब सहित कौन है परिबो par ही परिबो. And that was the requirement for the quantitative revolution. एबे ध्यान से बुझा पड़िबो कि why quantitative revolution was needed in geography, because the geographer themselves now realized and wanted to make the geography at par with the physical sciences, like as I said, let it be sociology, let it be economics, let it be polity, let it be also what public administration. These are the things. Okay, याकू दरकार थला है ना तेणु एमान को सहित पार हबार थला. And that is why we need a different phase in geography, and that phase is the QR phase, quantitative revolution. geography को अलगा सब्जेक्ट सहित पार करिया पे बा जो challenges geography face करूथला है ना second world time रे बा just after the second world war मतलब 1940s 19 it was 1940s and the 1950s, that was a challenging time for the geography, and hence geography गोटे नुआ मोड दबार थिला. अब से नुआ मोड हमें केमिति दबा by using the different tools in geography, and that tools are the हमें कहले कोन QR, that is the QR quantitative revolution. कोन कोन आसीबो सेथरे quantitative revolution रो टूल होची mathematics, geometry, statistics है ना physics, ये सब को यूज करिया थिला हमको geography रे एमान को यूज करी की that means quantitative revolution कहले use of quant in geography केते यूज होतला widely यूज होतला सेते पे ताको कहा जे revolution. As the geography after second world war or the geography in 1960s, geography in 1970s used widely used हेतला geography रे mathematics, science, geometry, physics, geography रे बहुत यूज हेतला. That means हम कहबा quantitative tools were widely used in geography after the second world war. Hence this phase in geography is known as the quantitative revolution or QR. अब बुझा पड़िबो नेबे हे परिबो आगे हम quantitative revolution रो जानिले कोन पई quantitative revolution आसीथिला. What is quantitative revolution?
tools कौन quantitative revolution ର? Is it audible to everyone? ଏବେ ବୁଝା ପଡୁଛି କିଛି ନା ବାଉନ୍ସ ହଉଛି? Now after ଆମେ ଦେଖିବା second world war ପରେ now suddenly GIF now जेके GIF କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ rank size rule फास्ट लोक जे कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रो तुरंत यूज कले बा तुरंत कोन कले नहीं अच्छा ये केमती बाहर करथले दैट इज आंको कथा मन पको दैट इज द pn इक्वल टू p1 बाय n है ना दैट इज द लार्जेस्ट सिटी बाय द रैंक ये डिवाइड कले रैंक साइज रूल बाहर कले केमिति ताले तमे नंबर यूज कलो इथरे कैलकुलेशन यूज हैला that is the calculation in geography statistics in geography data use kala geography re facts use kala geography re geography would be more empirical geography would be scientific geography become more scientific he gala जेतले तमे data facts use करूछो physics को use करूछो let's say हमें कोजे that is the what I will say Köppen climatic classification जेतले हमें Köppen climatic classification कोजे Köppen climatic classification रो कोन यूज करछे हमें mean average temperature कौन यूज करूँ हमें what mean average तो ये दीटा यूज कले ये सब कहा रो what statistics रो what that means आकु किए यूज कला Köppen अर्थ statistics is now diffused into geography ना बुझा पड़िबनी ओ कहया कथा तो statistics is now diffused into geography ताहले हमें कहबा मैथ को डिफ्यूज करा गला ज्योग्राफी रे ज्योमेट्री को डिफ्यूज करा गला है ना हमें पिरामिड वगैरह आसला कि ह्यूमन पिरामिड हो गला कि अमक हैला कि रैंक साइज रूल कथा नहीं जो कि हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट कथा नहीं जो क्रिस्टल सेंट्रल प्लेस थ्योरी कथा नहीं जो ये सब यूज ऑफ मैथमेटिक्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज ऑफ ज्योमेट्री and that means I would say the diffusion of geometry diffusion of statistics diffusion of all these things into the geography widely होउतला सेते पे हम ताको कहबा क्वांटिटेटिव फेज और द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन अरे बुझा पड़ुछि ना बुझा पड़बनी एबे किछि तो लिखि हेबो है ना बहुत स्मूथली पढौछि ओके तो एग्जांपल हमें एबे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रो हम जानिले आगे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन काई को जे काई के एई टाइम रे सिला कोन पाई दरकार तला व्हाट वाज द need was this geography was facing challenge the challenges were there and facing geography को गोटे न्यू फेज को नहीं कि जीवार था geography को इक्वल करियर था बाकी सोशल साइंस रे एंड जी आमे के द फर्स्ट पर्सन जे की कोन कले कंट्रीब्यूशन दवा स्टार्ट कले नाउ दैट इज व्हाई onwards thus in 1949 the what the congress developed the concept है ना that the social science should go to the adopt the quantitative tools for the scientific inquiry तो कांग्रेस कहले जो तमरो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कांग्रेस है कहले साइंटिफिक टूल यूज करो मैथमेटिक्स यूज करो ज्योग्राफी को जति रिवाइव करे पछि ना जीफ कहले फर्स्ट पर्सन जे कि यूज करले न्यू मेथड तुरंत यूज करले फर्स्ट ज्योग्राफर जे कि कहले रैंक साइज रूल है ना बस रैंक साइज रूल कोन करछ तो स्टैटिस्टिक्स यूज करछ डेटा यूज करछ नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करा गेला एंड दैट क्वांटिटेटिव टूल्स आमे कोन कहूचे जोटा मु कहले मैथ हे गेला क्वांटिटेटिव टूल्स रे तमर कोन आइसबो मैथ आसीगला I would say reasoning आसीजबो I would say geometry I would say physics आसीगला now these were used widely and statistics को भी यूज करा गला तो these were the tools of quantitative revolution तो quantitative revolution रो tools थिला देन हमें देखिबा डेफिनेशन है ये थिला तमरा बैकग्राउंड जाको हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आसीबरा बैकग्राउंड ना क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन मु तुम कहले दिस इज द बर्टन 1963 रे बर्टन आको कॉइन करथिले द वर्ड क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड कॉल द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी रे आको क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कहजे जेल वेरी रिचर्ड कॉर्ले was developed the geography हम कहबा quantitative revolution was developed in geography by जेल बेरी कोन देथिले एनीवन जेल बेरी हम कोन पे पढू कौन पे पढ़ू सिंथेसिस कौन सिंथेसिस हमें पढ़ू एरियल डिफरेंशिएशन है ना सिंथेसिस किस हम पढ़ू कि दैट मींस हमें कहूचे जेतले तुम कहूचे रीजनल सिंथेसिस कहूचो कि एरियल डिफरेंशिएशन कहूचो तो रीजनल सिंथेसिस की देथिले जेलवेरी सेथरे कोन यूज कला गेला मीन टेंपरेचर अमको बुझबो रिचर्ड कॉर्ले कथा नहीं जो so these were the people those who helped the quantitative revolution to peak रे पहुंचे पे
बटन जदियो वर्ड को कॉइन करथिले बट जेएल बेरी एंड रिचार्ड करले दे वर नोन फॉर द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। अरे मु कहि देबी जेतले हमें रीजनल सिंथेसिस पढ़िबा एडियल डिफरेंशिएशन पढ़िबा जानिछो जेएल बेरी रो कंट्रीब्यूशन कोन। द स्टैटिस्टिकल मेथड फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ज्योग्राफी 1950s रे है ना। तो आम कह ज्योग्राफी रे कौन है मैथमेटिक टूल्स है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लॉ ऑफ फिजिक्स ये देख ज्योग्राफी रे यूज है। सो ज्योग्राफी को गोटे नुआ फेज मिलला जो फिलोसॉफिकल थिला टॉपिक नॉट टॉपिक वुड बी मोर साइंटिफिकल अप्रोच। तो ज्योग्राफी रे एबे साइंटिफिकल अप्रोच आसीबो न्यू टूल्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट मॉडल्स एंड थ्योरीज। तेणु करी आम कहबा नंबर ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल्स will develop more after the 1940s because of the new tools, because of the what I would say the new tools in geography or the diffusion तो मतलब simple कही परिबो because of what diffusion of new tools into the geography। then I phases of quantitative revolution देखिबा कि what were the and जदि तुम देखो कि who were the propagator of the supporter है पीटर हेगेट then that is the Ockman, Schaeffer's, है ना, नेल हार्वे, कॉर्ले कथा नहीं जो इथरे तमे जदी कहबो सर एग्जांपल कोन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन सिंपल आकु पढिया दरकार तुमको सर ये ना मन रहिबो किछि मन रखे दरकार जोटा सिलेबस अछि ताकु मन रखो सिलेबस रो अछि तमरो कोन ना तमरो कोपेन क्लासिफिकेशन अछि। तो ये जो लोक क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एग्जांपल कारण कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीन एवरेज टेंपरेचर एंड रेनफॉल दैट मीन्स हमें कहबा तो ये कोपेन काल यूज करे कोन स्टैटिस्टिक्स दैट मीन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रो एडवोकेटर आमे सेंट्रल प्लेस कथा कहूचे है ना। तो सेंट्रल प्लेस कथा कहूचे सेंट्रल प्लेस थ्योरी याकू किए देले ना आकू देले हमर क्रिस्टलर तले क्रिस्टलर केमिति यूज करे ना माने पका 1/3 ये सब कैलकुलेशन है ना दैट मीन्स 1/3 into 6 plus 1 then half into 6 plus 1 then 6 plus 1 ये सब तो मन पड़थो तमरो मार्केटिंग प्रिंसिपल्स कोन थला मार्केटिंग ये थला तम ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल्स केते रहबो दैट इज द 4 and it would be what k equal to 4 that is 1/3 into 6 plus 1 k equal to that is the what 3 sorry k equal to 3 k equal to 4 k equal to 7 है ना k equal to 3 रहिबो मार्केटिंग प्रिंसिपल जो ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल्स so that was the 4 and that would be 7 ये सब जो हमें पढ़िथिले कोपेन रे सॉरी that was what central place theory तो दे आर आल्सो हमें कहबा कोठी न कोठी कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स बामे मैथ को यूज करूचे सेतनी तमरो सेंट्रल प्लेस थ्योरी भी आसी जीवो। अच्छा तमे वेबर कथा नहीं जाओ दैट मींस हमें कहचे वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी तो जो वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी रे भी तमे कोन यूज करचे डिस्टेंस को यूज करचे कैलकुलेशन करूचे दैट मींस हमें डिस्टेंस रे कोन कॉस्ट कैलकुलेशन करूचे तो कैलकुलेशन आसी अगेन स्टैटिस्टिक्स हमें कहबा तो दैट मींस वेबर थ्योरी भी हेबो सेंट्रल प्लेस थ्योरी भी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हबो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हबो आउ समथि माने पको लेट्स से हमें कहबा एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी भॉन्थुनेन थ्योरी भी हे परिबो। सो दीज ऑल दीज थ्योरीज आर द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जेल वेरी रीजनल सिंथेसिस क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रो फेस रीजनल सिंथेसिस समझो सिलेबस अछि रीजनल सिंथेसिस तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हमें कहबा कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रे जदी तमे कहबो कि एग्जांपल कोन दीज आर द एग्जांपल है ना ये है एग्जांपल। देन हमें बेस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हम देखिबा बेस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन तो जोटा म तुम कहले स्टैटिस्टिकल मेथड मैथमेटिकल ये सब आसे जेमति लॉ ऑफ ग्रेविटी माइग्रेशन रे यूज हेछि लॉ ऑफ ग्रेविटी माइग्रेशन यूज करछि हम थर्मोडायनामिक लॉ जेतले में थर्मो इकोसिस्टम को स्टडी करा जाउछि बुझ परछो ना तो मैथमेटिक्स यूज करछि जेमति लोकेशनल ट्रायंगल हे गेला वेबर पई है ना ज्योमेट्री यूज करछि थ्योरम्स हैला तो ये सब यूज करा जाइछि मीन मोड मीडियन ये भी तो होछि ना कोएफिशिएंट वेरिएंट जेमति भाबो तमे ताले आमे तो कोपेन एंड थॉर्नवेट्स जेतले तमे थॉर्नवेट्स पढुछो सेथरे कोएफिशिएंट वेरिएबिलिटी यूज करा जाइछि है ना प्रॉफिटेबिलिटी यूज करा होछि है ना लीस्ट कॉस्ट मॉडल कथा नहीं जाओ
कि ये सब आम स्टैंडर्ड डेविएशन रेनफॉल ये सब आम दैट मीन्स दिज आर द आम कह एग्जांपल बा जोटा कि आम कहीपर और आम कह बेस ऑफ वेरियस मेथड कौन कौन आम यूज करुचे कमी ज्योमेट्री को यूज करा फिजिक्स को यूज करुचे लेट्स से आम साइक्लोन पढ़ुचे आम साइक्लोन बा आम मानसून पढ़ुचे से तो आम पढ़ुचे ना कौटी केते सेंटीमीटर रेनफॉल है अगेन आम नंबर को यूज करुचे अगेन आम मीन टेम्परेचर को यूज करुचे मानसून जो प्रेडिक्ट करा ग्लोबल टेम्परेचर जो कहे तो साइंटिफिक अप्रोच तो यूज होची देन आम अप्रोच इन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन अप्रोच कौन लोकेशनल एनालिसिस आउ टिके पूर्व कहूली लोकेशनल एनालिसिस जोटा होगा जमी तुम वेबर हो जो कि पीटर हैगेट हो जो है ना और भंथुनेन कथा आउ टिके पूर्व कहूली से भंथुनेन हो ये सब कौन लोकेशनल एनालिसिस माने लोकेशन को फाइंड आउट करियो फॉर द आम कह इकोनॉमिक बेनिफिट गोटे एमती इंडस्ट्री ये हवा दरकार के फाइंड आउट द लोकेशन फॉर सर्टेन इंडस्ट्री सो दैट द इंडस्ट्री विल मेक प्रॉफिट है ना ये सब कौन सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये सब कौन these are the use of applying the statistical tool mathematics and this is the example of quantitative revolution so quantitative revolution हमें क्या passes through the three phase approach based on three approach एक तो locational analysis spatial analysis and system analysis locational analysis अर्थ कौन to find out a location है ना location where there would be maximum benefit will the entrepreneur or the people will get the maximum benefit in terms of waiver industrial location जहाँ को यूज करके लोग बेनिफिट पाइले एग्रीकल्चर मॉडल जहाँ को यूज करे लोग एग्रीकल्चर सिखिले स्पेशल एनालिसिस अर्थ कौन अरेंजमेंट ऑफ द फेनोमेनन कि कहीं की एठी होची फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक व्हाई अर्थक्वेक इज स्ट्राइकिंग इन द हिमालयन रीजन अरेंजमेंट करो तार लॉजिक कौन ताको हमें बुझीबा सो आको कह स्पेशल एनालिसिस टू नो द फेनोमेनन जो फेनोमेनन अच्छी ताको जानिबा तार आम गोटे एनालिसिस करबा दैट इज द स्पेशल एनालिसिस देन सिस्टम एनालिसिस आम कहबा जेमति सेंट्रल प्लेस थ्योरी तो ये होची तार कोन थ्री अप्रोचेस इन ज्योग्राफी ताले लोकेशनल एनालिसिस स्पेशल एनालिसिस एंड सिस्टम एनालिसिस है ना रिलेशन बिटवीन द सेटलमेंट हायरार्की ऑफ द सेटलमेंट तो ये रहबा तमरो कोन फेजेस आम कहबा जाको सॉरी फेजेस तो कोनी दिस वुड बी द अप्रोचेस इन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ताले टूल्स हमें देखिले टूल्स कौन थिला अप्रोच कौन अप्रोच होची लोकेशनल एनालिसिस अप्रोच होची सिस्टम एनालिसिस अप्रोच होची स्पेशल एनालिसिस दीज आर द व्हाट बेस हम जाको कह क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो वेरियस मेथड एंड टूल्स देन आ पूर्व हम देखिथिले व्हाई काहे की क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आसिला तार एग्जांपल्स कौन तार एग्जांपल डेफिनेशन बा किए देला बटन है जो कि को माने एडवोकेट करंती काहे की आसिला क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन व्हाई क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन in after the second world war then assumption quantitative revolution हम देखबा assumption देखबा quantitative revolution assumption कौन man who is economic and rational man has but that is the infinite knowledge then space that is the isotropic surface normative questions like culture these things there is no space कहले ये सब जिनस फालतू कथा है ना only economic जिनस को में ध्यान देबा assumed prices to be the same everywhere these are the some assumptions thela then hame philosophy dekhiba there are philosophies now the positivism is the philosophy which would be applied in the quantitative revolution largely तो सर positivism रो अर्थ कोन when I say positivism philosophy the philosophy which talks about the profit which talks about the economic man जो थ्रे जे कि मोराल जिनस को निये ना पॉजिटिविज्म फिलोसफी डज नॉट अकाउंट द वैल्यूज मोराल्स इथिक्स को कैंसल कर दिए ए माने कोनती फालतू ये सब जिनस दरकार नहीं हमको कोन दरकार केमती लोक बेनिफिट पाइबे लोक केमती इकोनॉमिक पीपल्स आर रैशनल अरे केही भी रैशनल न हो यदि समस्त रैशनल हेई थांते ताले मु जेमती कुए कि जणे ताले जाई न थे यदि लेट्स से एवरीवन इज रैशनल तो ताले दिल्ली को हम जाउचे टेस्ट सीरीज अपन गोटे टेस्ट 2000 नउची दिल्ली रे गोटे टेस्ट को 2000 एठी हमें 10 टा कि 15 टा टेस्ट 2000 दउछ हां ठीक अछि तुमको सर क्वालिटी कंप्रोमाइज होची तो क्वालिटी एमती कंप्रोमाइज होनी कि हमें 1000 टाइम खराब तांको ठू हम माइट भी हमें तांको पार नो वी आर नॉट पार बट दैट डज नॉट मींस से माने 100% हमें 1% एमती तो जमा भी नो तो बट हमें देखिबा तो दिस इज द रैशनल दैट मींस रैशनल लोको हमें केबा दुनिया रे समस्त रैशनल न हो जदी रैशनल हेई थांते तल लोको इलेक्ट्रिक व्हीकल तुरंत किनी देई थांते समस्त रैशनल जदी हेई थांते इफ पीपल्स वर रैशनल एनफ देन
People may not move from Cuttack to Bhubaneswar to dine here and to have the purchasing something out here in Bhubaneswar, because they know their fact that they will incur some sort of what transportation cost while moving to the different city. So people are not rational enough everywhere. ମୁଁ ତ କହିବି ଚାରିଆଡ଼େ rational ନୁହଁ ଲୋକ। ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କି ଆମେ ଦିୱାଲିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ କ'ଣ ଆମେ ରାସନାଲ କି ତା ପାଇଁ ରାସନାଲ ଆମେ ନୁହଁ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଇମୋସନ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ୟୁଜ କରୁଛେ କଲଚର ଆସୁଛି ବଟ୍ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରେ ଆଭଏଡ କରେ କଲଚର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ positivism consider man as economic and rational. So this is the thought of positivism. They always avoid the normative question or the normative principle which involves in the subject. Normative principle को से केबे भी ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି accept କରନ୍ତି ନାହିଁ. Normative principle would not be accept in geography. So that is the base of positivism philosophy. Hope you are getting me. तुमको ଲାଗିବ कि यार geography ରେ କୁଆଡୁ ଆସିଗଲେ ଆଜି ये thoughts କାହିଁ ପଢୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା but ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି कि hope you guys are feeling comfortable and I am not going or using ଏମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁନି ବା ତମକୁ ଯୋଉଟା ଜଣା ପଡ଼ିବନି and hope ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଏବେ positivism କହିପାରିବ that means ଯେତେବେଳେ ତମେ locational analysis କଥା ପଢୁଛ whenever you are talking about GL Berry you are talking about crystal central place theory you are talking about I will say what von Thunen model you are talking about Smith model katha nahi jo all these models they are based on positivism principles because that talks human is economic and rational. Hope you are getting me. ना बुझा पड़बनी अभी भी कौन कौच अरे बाउंस होची ना कौन आज दीक्षिता बुझा पड़ुची कौन है आज कहीं किसी कौन पूरा चुपचाप है दीजो ताले ये भाई दी चारटे टॉपिक नेले पूरा ज्योग्राफी काटो ना हाँ नहीं नॉर्मेटिव प्रिंसिपल को अवॉइड करा होची अगेंस्ट द नॉर्मेटिव क्वेश्चंस एंड द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिविज्म बट पॉजिटिविज्म सपोर्ट्स द इकोनॉमिक एंड रैशनल थॉट को बुझी पड़छ है ना तो देन फंक्शनलिज्म हम देखिबा द जाको लीड टू द सिस्टम एनालिसिस है ना फंक्शन को बिलीव करे रादर देन द हमें कि एरिया को हमें फंक्शन हमें एप्लीकेशन को देखिबा हमें तारो एम्पिरिसिज्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एबे जो तमरो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आसेला किमिति आसेला ऑब्जर्व कले से अच्छा एठी एति रेनफॉल होची एठी एति टेंपरेचर होची ऑब्जर्वेशन कले ऑब्जर्वेशन करी कि आने डेटास आने कलेक्शन ऑफ एम्पिरिकल सर्वे जा कोन कोचे डेटा डेटा फैक्ट्स जो कि जेतरा से ताको हमें को भले थ्योरी कहबो whether that would be deductive or inductive that would be inductive that would be inductive ये तो बुझाई छी ना थ्योरी को डिडक्टिव इंडक्टिव केतरो कहा जाए which are the normative principles so the normative principles means or the normative questions like you will use the value morals ethics culture ये सब जिनसो को यूज करबा इमोशन थॉट मतलब फीलिंग्स वगैरह यदि ये सब जिनसो को यूज करूछ कौन से गोटे मॉडल्स बा हमें थ्योरी बनेला बेले that would be ताको हम कहबा normative principles but normative questions are involved in that particular theory or models but those model does not have we will say that one is based in positivism principle functionalism केमिति function करूची function करूची let's say हम केबे गोटे central place theory गोटे ये केमिति function करूची या relation कोन that is the functionalism okay now these are the what philosophies behind the quantitative revolution if you are not able to let's say remember so many of the I would say what philosophies just positivism lekhiପାରିବ that would be enough because maximum theories that depends on the positivism next come the functionalism and empiricism as well but if you can relate that one then go for that that would be pretty well and well to watch like the empiricism when I say empiricism तुमको सर कोठी अप्लाई हिची मुको कोपेन रे empiricism applied करा जायछि then it was Thorndike classification empiricism is applied okay climatic classification रे में data नहले केमति classification करबा empiricism सब applied हेछि now phases of quantitative revolution so that means as of now हमें देखले quantitative revolution ये गोटे phase in geography as a discipline ना केबे आसेला ना 1950s 1960s रे चलला up to 1970s जाए ना ये कहीं के आसेला ना डार्क फेज को रिवाइव करे पे कोन पे ज्योग्राफी कोन हेतला ना ज्योग्राफी वाज नॉट having validation the different
I mean scholars मैंने geography को blame कले कि geography does not have use in the social like in the society like this sociology, polity, public administration, so on and so forth. So hence geography was needed as some sort of the boost. Geography was needed, revive itself. Geography needed to be more applicable to the society. And even we were talking about that the scholars congress which was held in the Princeton University in 1949, where they determined that those subjects, if you want to survive, then you have to change yourself. You have to change and you have to modify yourself. And the universities and they are in the Congress that was decided that the theories and the models which will come out for the different subjects, they must adapt the quantitative tools to revive themselves and to survive themselves in the particular scenario. Otherwise, you are going to have the drought condition, and hence the debate was also there. And particularly, I would say the tools were fast used by chief in the rank size rule. तो chief ताकू से कौन करो tools को use करो को tools कौन थिला tools थिला mathematics, physics, statistics, etc. so on and so forth all these things. Then तमे को आज वो कौन था किए कंट्रीब्यूटर थे कंट्रीब्यूटर के हम डिस्कस करेचे देन हमें डिस्कस कले प्रिंसिपल्स कौन थिला सो हमें केबे थॉट्स है ना तो ये थिला कौन तार हमें फिलोसफी देखिथिले प्रिंसिपल्स हमें देखि दो कि अजम्पशन भी थिला प्रिंसिपल्स भी हमें देखिथिले क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन अप्रोच 3 अप्रोच लोकेशनल एनालिसिस अप्रोच ये सब को हमें देखिथिले नाउ वी विल कम टू द फेजेस द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन डिफरेंट फेजेस रे मूव करिछि गोटे हला जेनेसिस फेज गोटे हला जेनिथ फेज गोटे हला डिक्लाइन फेज this is the decline phase, this is the zenith phase जोटा कि 50s and 60s that was the peak phase हमें जाको कहवा peak phase of quantitative revolution and this was the genesis जोटी start हितला है ना तो quantitative revolution को हम divide करें genesis phase von Thunen Weber these are the Ravenstein migration model Ravenstein माइग्रेशन मु तमनको देइथिली क्वेश्चन केही भी गोटिए थ्योरी लिखि नांती माइग्रेशन रे ना ग्रेविटी मॉडल लिखाइची ना ली मॉडल लिखाइची किछि भी लिखाइनी ये होची रेवेनस्टाइन ग्रेविटी मॉडल ये होची ग्रेविटी मॉडल आकु भी के लिखि नांती आंसर रे ना ली रो जो मॉडल्स लिखाइची समस्त लिखि चंदी कॉस्ट मतलब पुश फैक्टर पूल फैक्टर अरे पुश फैक्टर पूल फैक्टर देइथिले कि तांको आंसर लिखबो दैट इज द ली तापर तो टिके लिखिबो ना डिफरेंट मॉडल्स तो लिखिया पड़िबो ना मॉडल्स लिखिबो बा थ्योरीज इन्वॉल्व्स इन द माइग्रेशन ताकू टिके लिखिबो बुझ पड़छ नै देन 1950s 15 रो 50s रे में सेटलमेंट रैंक साइज रूल प्राइमेट सिटी ये सब आसे गेला ये सब थ्योरी डेवलप होईची है ना दीस आर द देखो दीस आर द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन देन 1950s 70s रे सेला तो ये थिला तमरो ग्रेविटी मॉडल वगैरह जहां भी हो डिस्टेंस डिकेल मॉडल अर्बन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये सब आसिला तमरो लैटर फेज रे बा जेनिथ फेज रे आसीबो देन आसो डिक्लाइनिंग फेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो डिक्लाइन हबो आ गोटे नुवा फेज स्टार्ट हो ज्योग्राफी रे जाको को क्रिटिकल फेज इन ज्योग्राफी ध्यान से मन रखो 1970s okay so that was after the 1970s the critical phase in geography started ध्यान से मन रखो प्रथम थिला डार्क फेज इन ज्योग्राफी then a new phase in geography quantitative phase came in geography and again after the 1975 to the 1970s I will say again this new phase in geography started that is the critical phase in geography jaku ko je critical phase in geography and in that critical phase nuwa nuwa asibo behavioralism radicalism welfareism women welfare environmentalism ये जो सब तुम्हारा सिलेबस राशि थी दे डेवलप्ड इन क्रिटिकल फेज ऑफ रेवोल्यूशन द क्रिटिकल फेज ऑफ ज्योग्राफी है ना जो तुम लिखाई थी रेडिकलिज्म फेमिनिज्म एनवायरमेंटलिज्म है ना ये सब लिखाई थी वेलफेयर अप्रोच दीज आर द बिहेवियरलिज्म ये जो सिलेबस राट है थी दैट वेयर है ना हमें कहा डेवलप्ड इन 1970s एंड आफ्टर दैट और 1980s it was simple I would say 1980s रे तेणु करके ये जो सब तुम सिलेबस रे जो पर्सपेक्टिव रो जो शेष आड़ को सिलेबस रो जो पार्ट गुडा अछि बिहेवियरलिज्म वगैरह जे डेवलप्ड इन द क्रिटिकल फेज ऑफ ज्योग्राफी ताकू कहा जे तो आफ्टर 70s बा 1980s 1980s को हमें को 1990s को हमें को क्रिटिकल फेज इन ज्योग्राफी ज्योग्राफी रो क्रिटिकल फेज को आ जाए होप यू आर गेटिंग मी जहाँ भी हो एबे एडवांटेज ऑफ हमें देखिबा एडवांटेजेस कोन हैला ताले
ताले क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन दैट मीन्स हम कहबा जो क्वांट the tools or the quantitative tools which were diffused into the geography, what were the advantages? कौन advantages simple geography को गोटे नुआ लाइफ मिलला, geography progress हेगला, geography more social relevance हेगला, geography नुआ नुआ मॉडल्स आसले, बहुत सारा मॉडल्स हम डिस्कस करते एग्जांपल रे ये सब कहते हमें रैंक साइज रूल दिस तो कौन नंबर ऑफ थ्योरीज ये सब थ्योरीज रैंक साइज रूल प्राइमेट सिटी सेटलमेंट ज्योग्राफी अमुक जेते आसला ग्रेविटी मॉडल ये सब कौन ना these are what these are theories model ए काहे की आसला क्वांटिटेटिव फेज जोगु क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जोगु तो ज्योग्राफी को गोटे हम कहबा ऑब्जेक्टिव हेकला ज्योग्राफी मोर ऑब्जेक्टिव रादर देन डेस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव हेकला एनालिसिस हैला मोर सोशल रिलेवेंट हेकला आउ ये कॉम्पिटिटिव भी हेगला ज्योग्राफी वुड बी मोर कॉम्पिटिटिव विथ द अदर डिसिप्लिन एज वेल सो ज्योग्राफी को लोग रेस्पेक्ट करबा स्टार्ट करले अगेन नुआ फेज मनला स्कैटर्ड हेगला ज्योग्राफी रे है ना तो ज्योग्राफी एबे कोन हैला मोर रिलेवेंट हेजबो एतिर तुमको वेबर आसी जिवो सेंट्रल वैल्यूज एंड व्हाट डेविएशन मेथड यूज करगला ज्योग्राफी को ओके ज्योग्राफी रे हम सब the use the nearest neighbor statistics जेमती तुमको rn वैल्यू पढ़ाई थिला हां कि नहीं बाबू rn नियरेस्ट नेबर वैल्यू ये पढ़ाई थिला कोथि में पढ़ाई थिला तुमको ये जो थरा में कॉम्पैक्ट डिस्पर्स ये कौन पढ़ी थिला में टाइप्स ऑफ सेटलमेंट और किछि त मन नहीं त मन करो हां कि नहीं ग्रेविटी मेटल माइग्रेशन पई ये सब हमरो दैट मींस दिस वे तो देन डिमेरिट्स कोन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रो डिमेरिट्स कोन डिमेरिट्स होची क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन दैट questioned or that didn't take normative questions while the phase was going on तो ये फेज रे नॉर्मेटिव क्वेश्चन रो कोनसी जागा नथिला ना फेथ ना बिलीफ ना इमोशन कोले ह्यूमन बीइंग को सिंपल हम इकोनॉमी के वो रैशनल करते बुझ पड़छ ना तो तेणु करी कि हम कहबा दैट वाज द मेन प्रॉब्लम नॉर्मेटिव क्वेश्चन को किछि सोसाइटी रो निया गला नहीं ओनली हम कहबा इकोनॉमी खैले लोक माने आइसोट्रोपिक सरफेस कर दिया गला अरे भाई एटा तो आइडियलिस्टिक आइसोट्रोपिक सरफेस देखा जाई मैन बिकम द सरफेस कैन आई से कि मैन्स आर rational जदि मैन्स rational हे गेले मैन आर इकोनॉमिक हे गेला जदि हम कहबा मैन rational एंड इकोनॉमिक हे गेला दैट मींस इमोशन रो किछि जगह ही नहीं मैन पाखरे और जदि मैन पाखरे इमोशन रो जगह नहीं दैट मीन मैन्स आर टर्न टू बी ओनली ए पॉइंट ऑफ द सरफेस डज नॉट हैव इमोशन तो ये सब जिंस को कौनसी प्रकार भी ध्यान दिया गला नहीं और दे deliberately avoided the normative principles of the society लोकेशनल एनालिसिस आम अप्रोच रे देखिथिले लोकेशनल एनालिसिस एंड कि तुम आम देखा दैट इज स्पेशल अरेंजमेंट है ना ये सब जिनस को ध्यान दिया गला ओके फंक्शनलिज्म को ध्यान दिया गला तो ताले ये कौन प्रमोट कला ना क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन प्रमोट लोकेशनल एनालिसिस जोटा कि आम कही कौन ना अप्रोच थिला और ता द्वारा कौन प्रमोट करूछ तुम कैपिटलिज्म इन द सोसाइटी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कि बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कैपिटलिज्म इन ज्योग्राफी बा कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आसीगला यूरोपियन सोसाइटी अमेरिकन सोसाइटी कारण लोक जानीगले इंडस्ट्री कौटी हेले बेनिफिट हम लोक जानीगले कौटी को एग्रीकल्चर करवा लोक जानीगले मार्केट कौटी हम कौटी दुकान करिया पड़े बिकॉज ऑफ द वेबर प्रिंसिपल बिकॉज ऑफ द वॉन्थुनन प्रिंसिपल एबे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आसला सोसाइटी नॉर्मेटिक प्रिंसिपल को हमें ध्यान देलेनी सो दैट ज्योग्राफी नाउ बिकम इकोनॉमिक अप्रोच है ना ह्यूमन कौन हो गला पैसिव एजेंट हो गला ह्यूमन रो किसी काम नहीं है ना इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म आसीगला इकोनॉमिक जिनस को अधिक दिहला लोक मैंने मशीन यूज कले ऑटोमेशन है सोफिस्टिकेशन हो गला है ना ये सब हमको देखा गला क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो किसी लोक अनएम्प्लॉयड भी हो गरीब भी किसी लोक धनी हो ताले आम कौन देखले आउ किसी लोक गरीब भी हो दैट मीन सोसाइटी रे इनइक्वालिटी भी यही फेज जो आसो इनइक्वालिटी माइग्रेशन ये भी ये हम ज्योग्राफी यही फेज जो कारण जो इंडस्ट्री डेवलप हम लोक मैंने माइग्रेशन करेंगे हाफ दैट इज द व्हाट हजार्ड कंडीशन तो बहुत सारा आम कहीपर एमती नेगेटिव फैक्टर्स आम ऐड कर ओके तेणु ये हूँ आम कहीपर देन कनक्लूजन कौन ना ये सब जिते पॉजिटिव जिनस तो आमको मिलला नेगेटिव जिनस मुझे तुमको कहली कि दिस वर द नेगेटिव थिंग्स
ଯେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆସିଲା ତୁମର ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ କରିକି ତାହେଲେ ବିକଜ୍ ବାଇ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ଲୋକ ରିଚ୍ ହେଇଗଲେ है ना ରିଚ୍ ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ଲୋକ ଅଧିକ କଲେ है ना सोसाइटी इनइक्वालिटी ଦେଖାଗଲା inequality in society migration in society then ଆମେ କହିବା economic imbalance in the society by the regional imbalance ଯାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା or I would say regional imbalance in the society ତେଣୁକରି ସୋସାଇଟିରେ ଏ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତେଣୁ ଏମାନେ କିଛି ଜୋଗ୍ରାଫର କାଉଣ୍ଟର କରିବେ ଏବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କି ଦେଖ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି କିଛି ଲୋକ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲେ ପୋଭର୍ଟି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ repercussion or these are the outcome of the quantitative revolution hence we need to change this approach okay ତେଣୁ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫେଜ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ after the 1977 after the 1978 or I would say the 1980s a new phase will start in geography that is the critical phase in geography which will talk about to reduce the inequalities through the what through the ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ୱେଲଫେୟାର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସିବ ଥ୍ରୁ ଦ ୱିମେନ୍ ବା ଫେମିନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଫେମିନିଜିମ୍ ଏନଭାयରमेंटलिज्म କାରଣ ତମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିଲ ଏଠି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଏନଭାୟରमेंटलिज्म ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ଏବେ କେମିତି ଲିଙ୍କ ହେଉଛି ପୁରା ସିଲେବସ୍ that is why environmentalism that is why feminism that is why or that is what I would say behavioral approach that is why all these things ये सब आसिला with response to the quantitative revolution hope you are getting me ना बुझा पड़िबनी done everyone ये थिला पूरा quantitative revolution